Hi, my name is Adil Ahmed Amir. Starting off with talk shows, I'm associated with 50 Minutes, the longest running show in the history of private channels in Pakistan. I have done 250 live episodes of 50 Minutes. In this program, we mainly discuss socio-political issues. जनूबी पंजाब के सिर्फ 3 अजला यानी मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर में 1000 से जायद तालीमी इदारे हैं। साउथ पंजाब जो है एक मेजर रिक्रूटिंग ग्राउंड है। साउथ में एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिससे कह सके कोई मदरसा इन्वॉल्व था। कबीर वाले में हम एक मदरसे में गए, हजारों तालिब इल्म थे और उसका तय खाना जो था वज़ला खाना था। मदरसे लांच होने की वजह सराकी इलाका नहीं। मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद ये लोग क्या करेंगे? इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का यही मकसद कि मैं इंशाल्लाह ना मेरी इरादा और ये नियत की है कि ये तालीम हासिल कर ना इनके 7 साल कोर्स दरसा में कर उसके बाद मैंने जो मेरी सोच और जो मेरी नियत है ना, तो वो मेरी यही नियत है। My favorite project I have done so far is a special documentary, State of Taliban, Swat. Swat was festering with the wounds inflicted by the Taliban when we reached there. Writ of the state was being challenged, the expressions of which were obvious in the form of trial courts, slaughtering of innocent people, dehumanization of age-old values, the specter of fear haunting the hapless populace of Swat, and ferocious crime perpetrated against hitherto an integrated social order. Don't say anything against Taliban. Don't. We'll be killed in bleak nights. Such were the voices of general public when they were asked, who is destroying their schools and why? Schools were blasted away, grid stations were destroyed, corpses were hung on thoroughfares. There was no one to listen to their plight. Brutality was ruling the roost. Even when troops had been roaming about the city, with the fall of night, insidious feelings overwhelmed the hearts. Using the reference of our local reporter, we went to trial courts after crossing Taliban-dominated areas. They appeared to be invincible, determined to rule the world, resolute to enforce Sharia, their literal and languishing interpretation of Islamic injunctions. Search of truth was a requisite. Stake of life was inevitable. People voiced against intentional delay of military operation, against the extremists, against the erosion of civil institutions, against the tacit support of establishment for the Taliban, and against the unheard cries of Swatis. मौलाना फजलुल्लाह ने FM रेडियो पर पहला खिताब किया। ये सब उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। सवात की तहसील मट्टा में प्योचार में मौजूद तालिबान पर रियासत की गिरफ्त ढीली पड़ती गई, हत्ता कि वो वक्त आ गया कि मकामी तालिबान के खिलाफ मुजाहमत रखने वाले इरादों को भी कुचला जाने लगा। लोग ज़िबा होने लगे। These fear-stricken people spoke against everything except against the Taliban, whose agents were scattered everywhere to gather information regarding people's approach towards Talibanization. नवंबर 2007 में सवात में फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ और मकामी लोगों ने फौज का इस्तकबाल फूलों के हारों से किया, क्योंकि उनकी धरती को आग और खून से बचाने की वाहिद उम्मीद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन था। FM radio station of Mullah Fazlullah was still working. Government didn't stop it from provoking people to participate in jihad against infidels.
Swat, the piece of paradise, was converted into piece of hell on earth. Footage of punishment by trial courts of Taliban was made stealthily. We were shuddered to our bones while making this footage, lest we should be marked by the Taliban. Brave Swati journalists, poets, lawyers, writers, and educationists were interviewed and requested to give vent to their feelings. They spoke and told us that they had been telling us all that at the cost of the lives of their families. रोजाना सरकटी लाशें देखते हैं। स्वात में लोग सुबह उठते हैं, कहते हैं आज कितने लोगों के सर काटे हैं। अच्छा, शाम तक किस मौजू पे, किस स्कूल को बम से उड़ाया गया है, किसको अगवा किया गया है, किसको गिरफ्तार किया गया है, किसके के कान काटे गए हैं। यार, जो जिस इलाके में सुबह शाम ये बातें होती हों, हम लोग तो नफ्सियाती तौर पर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान में लोगों को हमारा एहसास है। The valley was stricken with barbed wires instead of flowers, surrounded by sinister fear instead of serenity, subject to ferocity instead of fragrance. We came back after spending 3 days and 2 nights. All the while, we felt as if we had been wandering in the debris of ancient civilization, where bloodletting is prerogative of the powerful, where people are surprised when they get up alive in their beds with the advent of dawn, where enemy is hidden like a beast that is ingrained in the nature of man. For days, we couldn't come out of the nightmarish dreams of Swat. This documentary carried into effect a debate in the country whether the military operations are alienating the populace of Malakand from the authority of state. It was the first documentary that brought to light the feelings of Swati people regarding the destruction of infrastructure even when troops were posted there. Government resorted to quick action in eliminating the FM station of Maulana Fazlullah. Soon after, different other TV channels addressed the issue, and government was compelled to start military action against the extremists in Swat. After the military action was commenced, millions of people started migrating from Mingora and adjacent areas to Mardan. We went Mardan and found people sighing, screaming and crying under the scorching heat. They were scattered homeless, helpless, hopeless in the vast expanse of Mardan, Jalozai and nearby villages. I hope you find me and my work interesting enough to offer me a place in your prestigious institution. जैसे ये साहब मेरे साथ हैं, इस तरह के बहुत से लोग अपने राशन कार्ड लिए सड़कों, बाजारों और दफातर के चक्कर लगाते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। यहाँ पे भी सामने अगर आप देखें तो एक राशन इंचार्ज साहब को लोगों ने घेरा हुआ है। आइए चल के देखते हैं मामला है क्या। स्वाती अवाम की मुश्किलात उनके अज़्म से बड़ी नहीं है। अपने स्कूल से जंग की धूल साफ करते हुए ये बच्चे दरख्तों, पहाड़ों और वादियों की आगोश समेटने का इरादा किए हुए ये लोग फिर से शहर बसाने का हौसला बढ़ाते ताजिर, अमन का इजहार करते मकीन, गली कूचों की रौनक बहाल करते मेहनत कश, अच्छे दिनों की उम्मीद करते ये बुजुर्ग, फिर से स्याहों की राह तकती ये वादियाँ, ये नखलिस्तान अब वीरान नहीं रहेंगे। अमन का सूरज अब इन चमनजारों का मुकद्दर है।